Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve this question number 3 of exercise 2.6. Okay, what question number 3 is stating, students? We have to find, means we have to find the product of two decimal numbers. Okay, so here see 1.3 into 10. Now here if you will observe the all segment of the question, students, then what you will find that here multiplication of only 10, 100, 1000 like this is there. Okay, so what to do in this case? What we are doing in this case, students, let me explain you for one question in detail and then I will solve rest of the segments quickly. Okay, now see here we are having 1.3 into 10. Okay, now it is rule, students, when you have to remove this decimal, then you have to divide it by 10. Why? Because after decimal only one digit is there. Suppose after decimal there would have been two digits, and if I have to remove the decimal, then I would have divided it by 2, that is 2 zeros, that is 100. If suppose 3 digits are there, then we will divide it by 1000. If suppose 4 digits are there, then we will divide it by 10,000, like this. And if suppose decimal number is at denominator, then we will do the same procedure and this time we will multiply at न्यूमरेटर. ठीक है, सपोज कि ये 1.3 नीचे होता तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करते 10 से. ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ. अभी यहाँ पे अगर हमने ये डेसिमल को हटाया तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, टिल नाउ यू गॉट इट. नाउ इफ यू विल सिंप्लीफाई, देन यू सी स्टूडेंट्स, हियर दिस इज 10 एंड दिस इज 10, सो बोथ ऑफ देम विल कैंसल ईच अदर एंड फाइनली you will have as 13. How much you will have? 13. Why? Because we removed the decimal already. For that we divided it by 10. So we will have 13. Okay. Till now you understood. Now see here. What basically we are getting? If only one digit is there. Okay. Then after the decimal, if one digit is there, then if we are multiplying it by 10, then decimal and that 10 they are cancelling each other. अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो और 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो दोनों एक कैंसिल कर लेता है एक दूसरे को. ठीक है, अभी मैं तुम्हें और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ. ठीक है, नाउ आई विल शो यू सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस. सो इफ यू विल मल्टीप्लाई 1.3 into 10, then you will get 13. Okay, now see next segment number 2. So in segment number 2 we are having 36.8 into 10. Now again after decimal one digit, and here we have to multiply by 10, so again it will cancel each other. This one will cancel this one, so basically we will have 368. okay, अभी हमें और आगे अगर क्वेश्चंस मिलेगा जहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद हो और 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, आई विल लेट यू नो दैट. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट नंबर 3. In segment number 3, 153.7 into 10, again into 10. Okay, now again we are having 10 after decimal one digit and multiplied by 10, so again both of them will cancel and finally we will have this much as answer. Okay, now moving to next segment number 4. In segment number 4 what we are having, 168.07 into how much, 10. Now here we got one different question, students, है ना. अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद we are having 2 digits and here multiplied by only 10. Suppose here if would have been multiplied by 100, then these 2 zeros and then these 2, that is the 2 digits after decimal, they would have cancelled each other. लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाइड ओनली 10 दिया हुआ है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो ये डेसिमल जो यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये एक डिजिट उधर शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड की तरफ. ठीक है, ये डेसिमल जो यहाँ पे है, ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सो सिंपली विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन जस्ट वी विल शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स वन डिजिट टुवर्ड्स राइट साइड. क्या करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपली ऐसा कहीं पे भी दिखे तो क्या करना है, डेसिमल जो है एक हम उधर राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे. 168 0 एंड देन पुट डेसिमल 7. दिस इज योर फाइनल आंसर.
Okay, so similarly we will solve this fifth segment, students. In fifth segment we are having 31.1 into 100, 31.1 into 100. नाउ अब क्या करना है, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 100 है, तो क्या करेंगे, देखो अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होता तो ये डेसिमल और ये एक जीरो 10 कैंसिल हो जाता, लेकिन फिर 10 से मल्टीप्लाइड तो बाकी है. सो व्हाट वी विल डू, इट विल वन ऑफ द दिस डेसिमल एंड वन जीरो विल कैंसिल ईच अदर, और इसका आंसर जो है इतना इंटू 10 होगा, दैट इज 3110. ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं, आई होप यू नो इट. ओके, 311 1 जा 11 एंड देन वी आर प्लेसिंग 1 जीरो, और एज मेनी जीरोज आर देयर वी आर प्लेसिंग. ठीक है, तो क्या किया, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ये एक डेसिमल और एक जीरो कैंसिल किया एक दूसरे को. ठीक है, उसके बाद 311 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड फाइनली यू विल गेट दिस मच एज आंसर. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 6. In segment number 6 we are having 156.1 into 100. अगेन वी आर हैविंग सेम थिंग स्टूडेंट्स, है ना. तो क्या करेंगे, ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट और ये जीरो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा एंड देन वी विल हैव 1561 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10, सो 1 जीरो विल कम हियर एट रिजल्ट. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 7. सेगमेंट नंबर 7 is saying to multiply 3.62 into how much, 100. So this is very simple. Okay, here two zeros are there. Okay, and here decimal is after 2 digits, so both of them will cancel each other and finally we will have this much as our answer. Okay, moving to next segment, segment number 8 students. Okay, segment number 8 is saying to multiply 43.07 okay into 100. Again it is very simple. Okay, after decimal we are having 2 digits and here also we are having multiplication of 100, so both of them will cancel each other. Finally we will have 4307 as our final answer. Okay, now moving to next segment, segment number 9 students. Okay, segment number 9 is saying to multiply 0.5 into 10. So such questions we have already multiplied. Okay, here after decimal 1 digit multiplied by 10, so both of them will cancel each other and finally we will have 5 as our answer. Now moving to next segment, segment number 10. It is 0.08 multiplied by how much, 10 students. Okay, now here we are having 2 digits after decimal, but here only multiplied by 10. Okay, so decimal will shift 1 digit towards right. Okay, so it was 0.08, so it will become 0.8 only. Okay, उधर एक शिफ्ट कर देंगे. Now moving to next segment, segment number 11. Okay, segment number 11 is saying 0.9 to be multiplied by 100. Now again here after decimal we are having only 1 digit, but we have to multiply it by 100. Okay, so in this case 1 0 will cancel with the decimal and 9 will be multiplied to 10 and finally we will have 90 in our result. Okay, moving to last segment of this question students, that is 12th segment. It is 0.03 multiplied by 1000. Okay, so here again after the decimal we are having 2 digits and here at the multiplication we are having 3 zeros, so 2 zeros will cancel to cancel this decimal and still 1 0 will remain. So when you will multiply this 3 into 10, then you will get 30 in your result. Okay, so this was your question number 3 students. I hope you might have understood and thank you so very much for connecting with me.